So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, actually this is a very much demanded class where I'll be discussing about UNESCO, right? And a little bit about the history of UNESCO also we will discuss. Then we will discuss something actually related with UNESCO which was in the news, that is in 2025, like UNESCO World Heritage Site, Creative Cities Network, Intangible Cultural Heritage, etc. and all. So we'll be discussing in today's class. So let us begin. So am I audible, visible? If yes, then please write yes. So we'll be discussing in today's class. So let us begin. So is my voice clear? Is everything fine? If yes, then please write yes. And how is the preparation going on? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? I hope that your preparation is going on fine. I believe कि है ना? Yes. Good afternoon. The slides are visible. Everything is fine. Okay. Now I have one more question. Please tell me, today is what is special today? Anyone? What is special today? The date. Today's date is a special 26th November. And what is special today? A bit worry about GK. Pranshi, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है? थोड़ा बहुत तो होता ही आदमी को हल्का फुल्का टेंशन. हाँ. Constitution. Earlier it was called as Law Day. It is called as Constitution Day. So this date is mentioned where? Like 26th November is mentioned where? So there's a special famous document where you will find 26th November mentioned. Which is that document? Yes, preamble. And please tell me, this is 26th November 1949. Now I'll be asking some question, then I'll move to the UNESCO topic. Of course, today's topic is UNESCO, but we will discuss one or two lines here also. थोड़ा सा हम लोग आज के बारे में discuss कर लेंगे. Now please tell me why we waited for 2 months, 26 January 1950, to fully enforce the Constitution, even though it was adopted and enacted on 26 November 1949. Anyone? Why we waited for 2 months? Poon Swaraj Resolution. Very good, Pranshi Govind. We have discussed it in the Modern Indian History Revision class, 26 January 1930. Poon Swaraj Resolution was passed. So please go to the live section of our class, scroll down and you will find Modern Indian History Revision class. Very good, huh? Okay. And please tell me which are the terms that were added by the by the constitutional amendment in the preamble. And please tell me that which amendment did and what was special on that amendment. Socialist, secular, and there is one more word. Anish Dayal, you have answered to socialist, secular, integrity. Yes, Karthik, you're right. Socialist, secular, and here is integrity. This was added by, yes, Anish Dayal. Very good. 42nd Amendment 1976. Why is 42nd Amendment 1976 so important? Please tell me. Why is 42nd Amendment 1976 so important? What happened on that day? Or during that time? Mini constitution. Why this year is also important? It was during emergency, national emergency. And we have recently completed 50 years of national emergency. So what is the date on which this national emergency was invoked? Date बताइए. Date. Dates पूछते हैं एग्जाम में. CLAT 2021 PYQ उठा के देखिए. You will find 2 places where exact dates were asked. Exact date बताना है. I am yet to find. Yes, Riva Kharija, right. 25th June 1975. I have discussed in this class, since we have completed 50 years of emergency, this class becomes very, very, very important. So please watch this class if you have not watched yet. अगर आपने नहीं देखा है, so आप जरूर देख लीजिएगा. ठीक है? That is very, very important. हाँ, वही 21st March 1977 के आसपास तक था, right? Okay. Now let us begin with today's topic, that is UNESCO. So I have some questions regarding UNESCO. Please tell me where is the headquarters of UNESCO. So basically UNESCO is a specialized agency of United Nations.
Now, what is specialized agency and how it is different from organ? So we have United Nations organs and we have United Nations specialized agencies. Okay. So organs are 6 and we have multiple specialized agencies. Okay. Specialized agency बहुत सारी होती है, like we have UNESCO. So in this class, I have discussed it. I have discussed in detail about specialized agencies as well as organs. Okay. Yes, France, Paris headquarter. Very good. Okay. It has 194 member states. Now you'll be thinking, sir, 193 countries. How can 194 member states be there? So we will discuss. There are some countries which in United Nations it is not a member, but still it can become a member of UNESCO. We will discuss. And 12 associate members, that also we will discuss. Headquartered in Paris, France, and are founded in 1945 as a successor of League of Nations International Committee on Intellectual Cooperation. ठीक है. So नाम में ही बहुत कुछ है इसके, है ना? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल की बात करती होगी. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. एंड प्लीज टेल मी विच इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट ऑर्गन. So there are 6 principal organ of United Nations and under one of them it works. 6 principal organ है and under one of them this UNESCO works. ये आपको बताना है, ठीक है. UN ECOSOC, United Economic and Social Council. And who is the Director General of the UNESCO? Recently a new Director General has been appointed. New DG from which country? New Director General, a new head of UNESCO. So his name is Khalid Al Nani. Headquarters at Paris, France. Parent organization is UN ECOSOC, which is one of the principal organ of United Nations. Orders पहले थे. Now we are having, this is recently appointment. देखो 6 November को appointment है ना. So chances of this being asked is very high. Khalid Al Nani from Egypt is the 12th Director General of UNESCO. First Director General from an Arab country and second from Africa. Taken a first Director General from Arab country and second from Africa to hold this position after this person. Amadou Mahtar from Senegal. ठीक है. तो पहले तो आपको ये समझना है, this is called as Africa continent. Yes. यहाँ पे सेनेगल, यहाँ पे कहीं पे सेनेगल, यहाँ पे पता नहीं चला, but somewhere here is Senegal. Okay. So there was earlier the first African to be head of UNESCO was Amadou Mahtar from Senegal. Is the second African, but first from Arab country. So is Egypt an Arab country? Yes or no? It is saying Khalid Al Nani is actually from Egypt. Egypt Arab country hai? Yes or no? Just I wanted to know. Or is it written wrongly? कैसे? What is the meaning of Arab country? Just I want to know the clarity. What is the meaning of Arab country? क्या मतलब है इसका? Many North African countries see. Very good, Krishi Saldeva. पूरा ये हिस्सा पूरा, this entire is Arab country. ठीक है. हाँ, रिलीजन से भी लेना देना है, but it is more related with Arabic speaking people. ठीक है. So I'm sure you must be aware. तो ये पूरा रीजन जो है अरबिक बोलते हैं, चाहे तो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी या सेकंड लैंग्वेज होगी. Yes. So this entire region is they speak the Arabic language from here onwards. ठीक है, पूरा. So Syria, Iraq, even then, है ना, even Iran maybe to some extent. Yes, that's why I highlighted it because I know some people are not aware कि अच्छा Egypt Arabic country में कहलाएगा. ठीक है. So ये सब बेसिक चीज है. खैर. So that is what you should know. She was the previous one UNESCO Director General from French civil servant थी. She had served as 10th and 11th also because she has got 2 terms, so 10th and 11th Director General. 4 years का there is 1 term. ठीक है. So 4 8 years she has been. That's why the new one is actually considered as dual Director General. Even Israel has many Arabs. Yes, right. हाँ. Okay, so origin पे अगर हम लोग चलेंगे यूनेस्को का, है ना, so League of Nations से अपना पुराना, so no need to go in that detail. I don't think so. Now let's talk about members. ठीक है. So members, there are 194 members and 12 associate members. Okay, if your country is a member of United Nations,
then you have a right to get the membership. Okay, but still you can opt not to become a member of UNESCO. Like recently USA has decided to withdraw. ठीक है, अगर आपकी कंट्री यूएन की मेंबर है तो आपको अधिकार है कि आप यूनेस्को के मेंबर बन जाओ, लेकिन अगर आप नहीं पसंद करते तो मत बनो, मना करते है ना. दैट्स द आइडिया. States that are not member of United Nations can also become UNESCO member if the executive board of UNESCO approves by 2/3 majority. यानी अगर कोई यूएन का मेंबर कोई ऐसा कंट्री है जिसको यूएन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज अ कंट्री या ऑब्जर्वर रिकॉग्नाइज किया तो भी वो मेंबर बन सकता है अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो यूनेस्को वो 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव कर दे. इज इट क्लियर? आई एम टेलिंग यू, अभी देखो आगे आएगा ये चीज. दिस टू दैट्स आई एम टेलिंग यू. ऑल मेंबर्स हैव एस्टैब्लिश्ड नेशनल मिशन फॉर कांग्रेस. ठीक है, इतना काफी है. अब हम लोग देखते हैं जैसे इंडिया. यस, इंडिया इज मेंबर सिंस 1946. ओके, एंड विल सी स्टेट ऑफ पैलेस्टीन. दिस इज एन ऑब्जर्वर in United Nation. मैंने आपको बताया it is not a member of United Nation, it is not recognized as a country. ये नहीं है, ये है. And still it has become a member. And the reason is very simple because I'm sure executive board must have approved it by 2/3 majority. ठीक है. Similarly हम दिखाते देखो ये सब associate member, these are not countries. है ना, separate countries, Cayman Island, British Virgin Island, है ना, ये सबको associate members में रखा गया है ना. ये जो 12 एसोसिएट मेंबर्स है ना उसी में से, बिकॉज दीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन टेक्निकली. ठीक है, तो उसको एसोसिएट ही बना के रखा गया है ना. ओके, दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट, है ना. तो बहुत सारे जैसे 3 यूनेस्को मेंबर्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ यूएन मेंबर्स, है ना, लाइक कुक आइलैंड, नियो, पैलेस्टीन, है ना. नियो भी एक है, कुक आइलैंड भी है ना. सो दीज आर एक्चुअली ऑब्जर्वर्स, है ना. और बट स्टिल दे आर बिकम मेंबर ऑफ यूनेस्को. ठीक है, तो ये क्लियर है. अच्छा, 2 countries, Israel and Liechtenstein, these are proper countries, but they have not decided to be a member of UNESCO. ये proper United Nations recognized countries है, but they have decided not to be a member of UNESCO. Okay. कोसोवो का कौन सा मामला है? कोसोवो was approved for membership by UNESCO executive board, but the proposal did not receive 2/3 votes. Again, वही 2/3 votes finally नहीं गया, तो कोसोवो is not a member of UNESCO. ठीक है. So these are the things you should be knowing. पहले रफ आइडिया होना चाहिए. अभी देखो recently Donald Trump decided to withdraw again. So this is the 3rd time USA has decided to withdraw. So it's leaving an agency again 2 years after joining it. So last time also देखो सबसे पहले for the first time the United Nations withdrew. So United Nations was actually the original member of UNESCO. Okay. Second, 1984 में Ronald Reagan withdrew it. Okay. Anti-West, etc. Reason was नहीं जाना अभी. And George W. Bush joined it in 2003 when George W. Bush was the president of US. Then what happened was 2011 Palestine became a full member of UNESCO. Although Palestine is a United Nation, not a UN member, it is just an observer. Okay, and perhaps this is the very reason. Now what happened was of course USA reduced the funding, etc. And finally Donald Trump, when he came to power, he decided to withdraw from UNESCO. Okay, ये हो गया that there is anti-Israel bias and why you have allowed Palestine's membership. Then when Joe Biden came to power in July 2023, Joe Biden actually decided to again join it. Why? Because USA said that because of China's growing influence in UNESCO, etc., modernization, reform, etc. This is what the argument they gave. Then again, when Donald Trump came to power, this year in January, so Donald Trump says in July that I'm going to withdraw. Okay. So Israel is not a member and US is also US देखो ये effect होगा December 2026 से. So currently actually will pull out of UN because of the anti-Israel bias only 2 years after joining it. 3rd time. So 2 times तो डोनाल्ड ट्रम्प के जमाने में, एक रोनाल्ड रीगन के जमाने में हुआ, है ना. दिस इज द 2nd time during Trump administration. ठीक है. So the decision will take effect from December 2026. So if somebody asks, is US part of UNESCO today? You will say yes. अगले साल दिसंबर में विड्रॉ होगा. ठीक है. So in the examination hall, if the question is asked, is it a member? You have to say yes. ठीक है. एग्जाम जिस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपको आंसर करना होगा. As it decided to withdraw, you will say yes. है ना. Currently member? Yes, currently it's a member. ठीक है. So you have to answer it according to the questions being framed. Yes, CLAT aspirant वो सब contradiction होता है. ठीक है, अभी आप उसमें मत जाइए. ठीक है, don't go in that, है ना.
ओके, फर्स्ट जनरल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ये थे, इतना तो पूछेंगे नहीं, है ना. रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका भी विड्रॉ कर लिए थे 1955 में. आई मीन एट दैट टाइम साउथ अफ्रीका वाज नॉट इंडिपेंडेंट. सो 1990s में दे बिकेम इंडिपेंडेंट एंड नेल्सन मंडेला अगेन डिसाइडेड टू ज्वाइन. ठीक है, सो ये सब पता होना चाहिए. नाउ बहुत सारी कमिटीज हैं कि एक वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन हायर एजुकेशन वाज साइंड बाय यूएस, है ना. ठीक है, बाय यूनेस्को. देन इंटरनेशनल कैंपेन टू सेव मॉन्यूमेंट्स ऑफ नूबिया. नूबियन डेजर्ट है, देखो ये इजिप्ट का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये नाइल रिवर है, इधर नूबियन डेजर्ट कहते हैं ना. नूबियन डेजर्ट, ईस्ट कोस्ट ऑफ नाइल. ओके, सो एट दैट टाइम यूनेस्को का इनिशिएटिव था टू प्रोटेक्ट द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, that is what it is. This is the most famous World Heritage Committee was set up to talk about UNESCO World Heritage Sites or to protect UNESCO World Heritage Sites and Intangible Cultural Heritage List की बात हुई. We'll discuss about these two. These two are very important. ठीक है. So let us talk about World Heritage Committee. Of course, by UNESCO World Heritage Committee comprises of 21 states parties, है ना. They are elected for 4-year terms. इतना नहीं जानना ये है कि how many like first you please answer this question, and I think it's an easy one. UNESCO is under which are the following principal organs of United Nations? ECOSOC is the right answer. Very good, we have discussed it, so I believe you all should be knowing. How many cultural sites are there in India, UNESCO World Heritage Sites? So much confusion. Yes, Karthikya, Vanisha, Sachdeva, you are right. 36 is the right answer. How many natural sites are there in India? 7 is the right answer. जल्दी में गलत पढ़ लिया. You have to be very careful. एग्जाम में you will be given very less time. देखो मैं आपको यहाँ पे मिक्स साइट्स को लाइक हाईलाइट कर दे रहा हूँ. एग्जाम में थोड़ी कोई हाईलाइट करने को होगा, वो आपको खुद से पढ़ना होगा. You have to be very careful, read it carefully, fast, and then you should not do silly mistakes. Mixed site is one. Which is that one? वो कौन सा है? So 36 cultural sites, 7 natural site, 1 mixed site is together total 44. ठीक है. So this year in 2025 we have seen 1 getting added from here. So basically earlier it was 35, now we are having 35 plus 1. What is that one? वो कौन सा है? Which was added this year in 2025. ये जो 1 mixed है वो कंचनजंगा है. वेरी गुड. रीवा खनेजा. Many people have answered. सचदेवा, CLAT aspirant था. कंचनजंगा. सिक्किम में है ना. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप. वेरी गुड. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप 2025. ठीक है. This was added this year. ये 36 कल्चरल साइट्स है आपके सामने. Then we have 7 natural sites and 1 mixed site कंचनजंगा. तो देखो नेचुरल साइट्स में रिसेंट एडिशन कोई नहीं है, सब बहुत पुराना एडिशन है. बट कल्चरल साइट इफ यू सी 2024 में भी एक ऐड किया गया. 2024 में एक था वो आसम वाला, हाँ, चारादेव मैदान. देखो ये भी 2024 में ऐड हुआ था. 2023 में ये सब ऐड हुआ था, ये दोनों. ठीक है. सो रीसेंट एडिशंस यू विल फाइंड इट इन कल्चरल साइट्स ओनली. टोटल अब 44 साइट्स है. यस. सो व्हेन वी हैव टोटल 44 फॉर साइट्स, द 44th वाज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, है ना. Which comprises of how many forts? कितने फोर्ट्स हैं? Yes, B is the right answer. इन 12 को एक it is considered as one site in UNESCO. ठीक है. Okay, Maratha military landscape they are considered. When it comes to UNESCO, they are getting all 12 are considered as one entity when it comes to UNESCO World Heritage Sites. One is Tamil Nadu, other is Maharashtra. Very good, Krishi Sachdeva. JNJ is in there. So the right answer, what is the answer to this question? इसका आंसर क्या है? D. 11 out of 12 are in Maharashtra. And D is the right answer. One of the 4 situated is in which state? देखो अच्छा ना रिविजन हो जा रहा है इसी बहाने. One is in Tamil Nadu. What is the name of that fort? D is the right answer. कौन सा फोर्ट है जो अकेला? वही पूछेंगे जो अलग होता है.
गिंगी फोर्ट बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. हाँ, so ये 12 फोर्ट है. चलो थोड़ा थोड़ा के बारे में जान लेते हैं. जेंगी फोर्ट इज इन तमिलनाडु. द रेस्ट 11 आर एक्चुअली इन महाराष्ट्र. Which period it was developed? Anyone? This we had done it earlier. Right answer is 17 to 19. So B is the right answer. Yes, people are answering it. Maratha military landscape. है ना? इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था जनवरी 2024 में ही, है ना? Now it has been added. During the 47th session of World Heritage Committee being held in Paris, Maratha military landscape, dual components. है ना? So Jengi Fort is in Tamil Nadu and declared as World Heritage Site in 2025. The rest are actually in Maharashtra. ठीक है. Okay, so let's talk one by one. This is Lohagarh Fort, awesome place, है ना? That is what, this is the one, you can see these images, and I think it is in Lonavala as far as I remember. हाँ, Lonavala. It's a nice place to visit, है ना? Raigad was the capital. We'll come to that. हाँ, नहीं टेंटेटिव लिस्ट नहीं पूछेंगे, लेस चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड. ठीक है. यहाँ ये मुंबई है, पुणे, इसके बीच में यहाँ पे मिलेगा लोनावाला. ठीक है, ये कल्याण, लोनावाला, पुणे, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा. देन अनदर इज लोहागढ़ फोर्ट. ये राजस्थान में, ये वाला राजस्थान वाला नहीं है. ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल. ये दूसरा लोहागढ़, वही हम क्लैरिटी के लिए बता रहे हैं. जो दिस लोहागढ़ इज एक्चुअली हियर. लोनावाला हिल स्टेशन है मुंबई के पास. हाँ, so those who are from Mumbai, they are aware of that. Panhala Fort. This is Panhala Fort, and these are the images of Panhala Fort, and you'll find it in Kolhapur, Maharashtra. सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं. This you should be knowing. ठीक है ना? यहाँ पे पनहाला फोर्ट, ये मुंबई है. सो काफी साउथ में महाराष्ट्र के, मच साउथ फ्रॉम मुंबई, है ना? सिंधुदुर्ग फोर्ट. दिस इज सिंधुदुर्ग फोर्ट, एंड दीज आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल इमेजेस. ठीक है, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज वी हैव टू कवर अ लॉट, है ना? कोंकण रीजन अगेन वहीं पे, सिंधुदुर्ग भी वहीं पे, नीचे में ये मुंबई है. अंदाजा लगा लो कहाँ पे. ये जो स्टेट है महाराष्ट्र स्टेट है. ठीक है, एंड हियर इज मुंबई. ठीक है, कोंकण रीजन में सिंधुदुर्ग फोर्ट, वेरी नियर टू एक्चुअली गोवा. यहाँ पे नीचे गोवा आ जाएगा, बस पास में ही. ठीक है. नेक्स्ट इज विजयदुर्ग फोर्ट. सो विजयदुर्ग फोर्ट है ना? शिवाजी एक्सटेंडेड, हाँ, ईस्टर्न केब्राल्टर इसको कहते हैं. सो जस्ट हैव एन आइडिया. और विजयदुर्ग फोर्ट भी वहीं पर है, कहीं पे नियर टू गोवा. ये दिस इज मुंबई, है ना? नाउ यू कैन अप्लाई द लॉजिक. स्वर्ण स्वर्ण मतलब गोल्ड होता है ना? स्वर्ण फोर्ट. सो दीस आर सम ऑफ द इमेजेस. स्वर्ण, है ना? गोल्डन फोर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड. फेदर इन द गोल्डन कैप ऑफ मराठा. एंड दिस हियर, ये थोड़ा ऊपर नॉर्थ है, यानी मुंबई से इट्स आई थिंक कंपैरेटिवली क्लोजर, है ना? सो दीज ऑल आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना? नेक्स्ट इज रायगढ़ फोर्ट. रायगढ़ और राजगढ़ ये कैपिटल रहा था. रायगढ़ खास करके स्पेसिफिकली, रायगढ़ वाज एक्चुअली द मेन कैपिटल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. ठीक है, रायगढ़ याद रखिएगा. छत्रपति शिवाजी मेड रायगढ़ हिज कैपिटल इन विच ईयर? प्लीज टेल मी. ये सब पूछ सकते हैं. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द रिवीजन. द राइट आंसर इज 1674. यस, बी इज द राइट आंसर, है ना? रायगढ़ along with इंजीनियर, है ना? ठीक है, यू कैन रीड. हाँ, तो मुंबई से पास में, ज्यादा दूर नहीं. आई थिंक 120 किलोमीटर के आसपास होगा मुंबई से. 120-130 किलोमीटर समथिंग. ठीक है. बिफोर रायगढ़ द कैपिटल वाज राजगढ़. सो राजगढ़ सर्व्ड एज कैपिटल एंड लेटर ऑन दे मूव टू रायगढ़. तो नेक्स्ट मूव ऑन सालहेर फोर्ट है ये. ठीक है ना? सो सालहेर फोर्ट नासिक में, ये नॉर्थ में. देखो ये मुंबई है. मुंबई से आपको इधर सालहेर जाना पड़ेगा. इधर हेयर इट इज, है ना? गावलगढ़ भी कहते हैं, है ना? दैट्स व्हाट यू. शिवनेरी फोर्ट. सर शिवनेरी फोर्ट, है ना? पुणे के पास है ना? बर्थ प्लेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. ठीक है, शिवनेरी फोर्ट, है ना? ये पे, ये मुंबई है, ये पुणे है, यहाँ पे कहीं पे शिवनेरी. ठीक है. नेक्स्ट इज खानदेरी फोर्ट, है ना? कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र. सो ये आई थिंक मुंबई के अंदर ही है, साउथ ऑफ मुंबई, नियर टू मुंबई, वेरी नियर. नेक्स्ट इज राजगढ़ फोर्ट, द ओल्ड कैपिटल, है ना? सो राजगढ़ फोर्ट पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में. ठीक है, यस यू कैन सी. नेक्स्ट इज प्रतापगढ़ फोर्ट. प्रतापगढ़ फोर्ट
सतारा डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न इंडियन महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मुंबई है, यहाँ पे प्रतापगढ़ है। So I'm just giving an idea, सब रटना नहीं है। The last one is Jengi Fort. This is the most important because this is not in Maharashtra. और यही पूछा जाएगा, ठीक है। होता क्या है, क्वेश्चन मेकर आर वेरी स्मार्ट, दे ऑलवेज ट्राई टू एक्चुअली ट्रिक यू because you will think Maratha military landscape is associated with Maharashtra if you apply the logic, but this one is in Tamil Nadu. Senji Fort भी कहते हैं या Jengi Fort. So that's why the question maker is also smart enough. तो Troy of the East कहते हैं most impregnable fortress in India, है ना, ठीक है। So ये सब वर्ड पता होना चाहिए। This is not in Maharashtra but in Tamil Nadu and hence it becomes important. Jengi Fort या Gingi Fort कहते होंगे या Senji Fort, है ना, that is what you should be knowing. So this is Tamil Nadu. Here is Jengi Fort, perhaps very near to Chennai. है ना। So मराठा के बारे में प्यार के बारे में I'm sure you must be aware of the concept of Peshwa etc. है ना। So these are the things you should know, है ना। और एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज बिलोंग टू भोसले डायनेस्टी, ये पता होना चाहिए, है ना। So Sindhyas were from Indore, Gaikwads from Baroda, Holkar were from Indore, है ना। सिंधियास भी आई थिंक थे उधर ही, क्या ना। सो ये वाला इंपॉर्टेंट है, भोसले डायनेस्टी, शिवाजी, 1674 फॉर मलिक क्रोन छत्रपति इन रायगढ़ फोर्ट, ठीक है। Now let's talk about intangible cultural heritage list. Intangible means things which cannot be touched, है ना, जिसको छुआ नहीं जा सके। जैसे डांस हो गया, सॉन्ग हो गया, आर्ट फॉर्म हो गया, वो तो टैंजेबल नहीं है वो चीज। जैसे ताजमहल है, इट कैन बी टच, इट्स अ टैंजेबल थिंग, है ना। सो दैट्स व्हाट यू शुड नो। हाँ, अहिल भाई होलकर का 300 एनिवर्सरी हुआ था, यस, होलकर से, यस, याद आ गया, 300 एनिवर्सरी, वेरी गुड कार्तिक। अभी उसमें शायद कॉइन भी रिलीज किया गया था, है ना। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो यूनेस्को के ओरल ट्रेडिशन या एक्सप्रेशन से किया जाए, इंटेंजिबल का होता है ना, या परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, या सोशल प्रैक्टिसेस हो, या नॉलेज हो, नॉलेज भी तो इंटेंजिबल हो गया। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन और दीज ऑल आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंटेंजिबल, है ना। सो इसमें अपन देखते हैं क्या क्या है। सो कैन यू प्लीज टेल मी that this year in 2025 the government of India has requested which I'll not be giving the example X for to be added in UNESCO Intangible Cultural Heritage. What is that X? 2025 में भारत सरकार, यस, छठ फेस्टिवल, वेरी गुड चंद्रलेखा, वेरी गुड, हाँ, छठ फेस्टिवल फ्रॉम बिहार। तो थोड़ा सा पुराना देख लेते हैं। 2008 में देखो वैदिक चैंटिंग है, रामलीला है, कोतियात्तम है, संस्कृत का थिएटर है, फिर रामन रिलीजियस फेस्टिवल होता है, फिर और भी अब देखो कलबेलिया फोक सॉन्ग, छाव डांस, है ना, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, नवरोज योगा संकीर्तन, कुंभ मेला 2017 में ऐड हुआ था, दुर्गा पूजा 2021 में और गरबा ऑफ गुजरात 2023। ये रिसेंट का तो इंपॉर्टेंट होता है। 2025 में द गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड टू ऐड, so till now I think it has not been added but the government has requested, so this can be asked. Chhat is a very famous festival from Bihar and it is a festival for what? The prayer of sun, है ना, sun god is done, right? A few days after Diwali, I think 6 days वगैरह कुछ होता है, उसके बाद after that this Chhat festival is organized where people actually take bath in river, specifically Ganga river. हाँ, India has requested for this, ठीक है, 6 days after Diwali, है ना, सी बताएं। हाँ, नेक्स्ट है यूनेस्को का मैब प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। First of all, you have to understand what is the difference between wildlife sanctuary, national park and biosphere reserve. I have already taken a separate classes on it, but just have an idea that biosphere reserve is quite big and inside the biosphere reserve you can find multiple national park and wildlife sanctuary. वो काफी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। यस प्रांशी, वेरी गुड, विल कम टू दैट, जो आप लिख रहे हो ना, विल बी कमिंग टू दैट। हाँ, सो बेसिकली द एंड व्हिच वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, फर्स्ट तो भी रिकॉग्नाइज्ड। सो मैप प्रोग्राम के अंदर कॉन्सेप्ट दिया गया था। सो करेंटली वी आर हैविंग 18 बायोस्फीयर रिजर्व, आउट ऑफ व्हिच हाउ मेनी आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्को प्रोग्राम? फर्स्ट वाज नॉट सुंदरबन, फर्स्ट वाज नीलगिरी, विल कम टू दैट, ठीक है। तो आउट ऑफ 18 में से 13 आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को मैप, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है।
So the 13th is this one, cold desert in Spiti Valley, actually in Himachal Pradesh, not in Ladakh. ध्यान रखिएगा, ये वो वाला नहीं है. हाँ, so 13 are recognized. The first one was actually Nilgiri. And even out of total भी आप देखोगे ना, तो 1986 में जो start किया गया था concept, so 1986 में the first one was Nilgiri. ठीक है? And even in World Network of Biosphere Reserve also, the first one that was recognized in year 2000 was Nilgiri. But they will ask this, ये वाला पूछेंगे, this year's edition is 2025. ठीक है? तो ये हिमाचल हो गया, ये स्पीति वैली in the border of China, है ना? Very, very, very important. Cold Desert Biosphere Reserve in Himachal Pradesh, very near to the border of Ladakh. ठीक है, याद रहेगा. So now total biosphere reserves are 18. 13 are recognized by UNESCO's MAP program, that is called as World Network of Biosphere Reserve. ठीक है. First one is Nilgiri. The latest addition is Cold Desert, not in Ladakh but in Himachal. ये हिमाचल वाला है Cold Desert. Very important. छोटी सी चीजें, हाँ, बट आप कंफ्यूज कर जाओगे इसलिए मैं बता दिया. फर्स्ट ओल्ड बायोस्फीयर रिजर्व वाज एक्चुअली नीलगिरी. दिस इज अ प्लेस वेयर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट्स. ये ट्राई जंक्शन है, and this is what we call it as Nilgiri. And this is a previous year question of AILET also, famous for Neela Kurunji flower, someone has written. Very good. This is Kerala state, this is Karnataka state, and this is Tamil Nadu. यहाँ पर junction है of 3 states. This is also the place where western and eastern ghat meets. This is the first biosphere reserve. This is the place where Neela Kurunji flowers blossom after 12 years. ये इसका scientific name है, Strobilanthes conthiana. These are previous year question of AILET. ठीक है. और क्या बता रहे थे, देखो इसमें कितना सारा बायोस्फीयर रिजर्व, वायनाड, नागरहोल, बंदीपुर, मुखूर्ती, सत्यमंगलम, साइलेंट वैली, सबका नाम सुने हो कभी? तो ये बताते हैं. यहाँ पे वायनाड, मिस्टर राहुल गांधी वाज एक्चुअली एमपी फ्रॉम हियर. ठीक है. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व. ठीक है. फिर इस दोनों में से कोई एक नागरहोल, एक बंदीपुर है. इस दोनों में से कोई एक में मोदी जी गए थे 1-2 साल पहले. किसी को याद है? As far as I remember, he visited Bandipur. ये दोनों यहाँ पर है कर्नाटक में, नागरहोल एंड बंदीपुर पास में ही पे है ना. आई थिंक he visited बंदीपुर. मुदुमलाई, साइलेंट वैली केरला में, साइलेंट वैली भी यहाँ पे कहीं पे, साइलेंट वैली समवेयर. यस, यूनेस्को के के लिए इंपॉर्टेंट है. यस, ये पूरा जो रीजन है इसी को होता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इन बायोस्फीयर रिजर्व देयर आर मल्टीपल नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. है ना. ये हो गया, डन विद दिस. फिर है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क. ओके, यूनेस्को's क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, फ्लैगशिप सिटी प्रोग्राम है यूनेस्को का, लॉन्च इन 2004 टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग सिटीज व्हिच हैव रिकॉग्नाइज्ड कल्चर एंड क्रिएटिविटी, जिसने कल्चर और क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज किया है. ओके, सो द कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इन 2004 एंड earlier we had actually 7 categories. Now this year 8 categories are there. So architecture was also added. So ये सब है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के टाइप्स, और आई वुड से कैटेगराइजेशन. क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, यानी if a city is famous for craft and folk art, if the city is famous for design, if city is famous for film. गैस्ट्रोनॉमी मतलब फूड से रिलेटेड, गैस्ट्रो, फूड, क्यूजीन, culinary, ऐसा वर्ड लिखा रहेगा ना, खाने से रिलेटेड. लिटरेचर, म्यूजिक, मीडिया आर्ट्स. द लास्ट वन एडेड इज आर्किटेक्चर. Now this year we have seen one Indian city getting added. Please tell me which city and under which category. Lucknow. Very good. कौन से कैटेगरी में? Under which category Lucknow has been added? Culinary. हाँ, gastronomy is actually कह रहे हैं, खाने से related. Yes. So these are Indian cities. So जयपुर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, बनारस म्यूजिक के लिए, चेन्नई म्यूजिक के लिए, है ना. बनारस घराना भी होता है ना, कथक डांस में नहीं, किसमें होता है बनारस घराना? इस देर हिंदुस्तानी म्यूजिक में कुछ होता है बनारस घराना, है ना. चेन्नई इज फेमस फॉर म्यूजिक, ये अगेन कार्नाटिक म्यूजिक यहाँ होता है, यहाँ बनारस घराना होता है ना. सर्च कीजिएगा, घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, है ना. हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, आपने हैदराबादी बिरयानी और क्या क्या सुना होगा, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. मुंबई फिल्म, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है. श्रीनगर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स वहां आता है. श्रीनगर में बहुत सारे पश्मीना शॉल और डिफरेंट थिंग्स बनते हैं. ग्वालियर इज फेमस फॉर म्यूजिक, आई एम नॉट श्योर अबाउट ग्वालियर. कोझीकोड कैलिकट फेमस फॉर लिटरेचर. ओके, एंड लखनऊ फॉर गैस्ट्रोनॉमी. ठीक है. सो ये लेटेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. इससे पहले एक बार और गैस्ट्रोनॉमी मिल चुका है, हैदराबाद, है ना. हलीम बिरयानी इज ऑल्सो फेमस इन हैदराबाद. यस, हलीम इज फेमस. यस यस, ठीक है. आप लोग तो मेरे साथ ही जानते हो खाने के बारे में. खैर, यूनेस्को ऑनर कलरी अवेकनिंग, लखनऊ डेली डिस्कवर्स इट्स सोल थ्रू फूड, है ना.
तो ये खाने से रिलेटेड है, तो यहाँ बहुत सारा खाना वाना मिलता है। अवधी क्यूजिन के, अवध जो है ना ओल्ड नेम ऑफ लखनऊ है, ओल्ड नेम ऑफ लखनऊ, ऐसे भी लिखते हैं, OUDH भी लिखते हैं, ठीक है। सो अभी एक्चुअली क्या हुआ है, एक आपकी न्यूज है देखो, नवंबर है ना, 5 नवंबर। सो बेसिकली this is 43rd session of UNESCO General Conference happened in Uzbekistan and here it was decided, ठीक है। तो अभी 43rd सेशन हुआ था यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का, उसमें ये डिसाइड किया गया। हाँ, अवधी भाषा भी है, अवधी कल्चर भी है, सब वही उसी से आता है। हाँ, तो यहाँ पे टंडे कबाब्स और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे खाने के आइटम्स फेमस है। सो आई वाज रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, इसमें इस आर्टिकल में, ये कोई द हिंदू ये आर्टिकल, जिसमें मैं नीचे स्क्रॉल कि खाली खाने की फोटो ही थी, एंड देन आई सेड कि अब स्टॉप कर देना चाहिए, तो खाने की फोटो देखते रह जाएंगे, है ना। सो दिस इज एक्चुअली, आई थिंक वी हैव डन दिस क्लास एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, है ना। थैंक यू एवरीवन। हो सकता है नेक्स्ट वीक वी विल बी हैविंग सम क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, ठीक है। So please press the like button, share this video. Thank you everyone, and I hope and I pray that you will get good rank in the examination. आपका एग्जाम अच्छा जाए, है ना। वैसे I think we'll be having some more classes, है ना। So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.